I'm going to tell you 5 ways or 5 steps in which you can actually build your approaches if you are a beginner as well. ठीक है, तो जाओ. सबसे बड़ी बात है, स्टेप 1 है बाहर निकलो. पहले तो मतलब तुम्हें नहीं मन कर रहा गेम करने जाने का, तुम किसी और बहाने से बाहर निकलो. तुम्हें गेम करने का मन है, गेम के बहाने से बाहर निकलो. बट डोंट स्टे जस्ट बैक होम. अगर तुमको गेम करने का हिम्मत नहीं हो रही, मन नहीं हो रहा, find a person who can push you. Make somebody your friend from the gaming community, jahan se people can come and they can join you. They call you sometimes, you call them sometimes, and you become friends, and they are pushing you, you are pushing them. So this can be one way how you can improve more consistency in terms of going out to approach. If you are having that fear in your head, ki yaar, how would it work out for me? I don't know how to do this and stuff. So find somebody who can help you out. Second is when you go out, carry yourself in a good way. मतलब basics अपने अच्छे sort करके रखो. Grooming अच्छी होनी चाहिए. Whatever you're wearing should go like in a decent way. Just carry yourself in a decent way possible. बाल ढंग से बना रखे हैं, अच्छा स्मेल कर रहे हो, यू आर हैविंग योर बेसिक एक्सेसरीज और व्हाटएवर. पर्टिकुलरली ठीक है, बाहर निकलने के बाद के प्रोस कौन होता है? द इंटेंशन इज टू हैव फन. द इंटेंशन इज टू नॉट गो एंड पुल अ चिक एंड पुल मेक अ पुल करना हर दिन का इंटेंशन नहीं होता भाई. इंटेंशन होता है टू गो आउट एंड हैव फन. एंड इफ यू कैन जस्ट गो आउट एंड डू दैट, ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारा वही माइंडसेट है, यू विल एंड अप finding that one for yourself. Get comfortable with the place. That is step 3 for you. Once you reach outside, the first step is be comfortable with the place. If you would not be comfortable with the place, then it will become much more difficult for you to go and do that. Okay? So that would be your step 3 or step 1 after you go out. Start saying hi to random people. Start making conversations. ऑटो में जा रहे हो, ऑटो वाले भैया से बात कर लो. कुछ शॉप से कुछ खरीद रहे हो, उनसे बात कर ली कि भैया कैसा दिन जा रहा है, क्या चल रहा है भाई, हाउ आर यू. कोई सही बंदा दिख रहा है आसपास से जा रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो. कोई बंदी जा रही है, टेल देम जस्ट से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाटएवर. आई लाइक योर आउटफिट, यू पीपल हैव अ गुड वाइब. हाँ, compliment a kid, compliment somebody that you feel like is. Over that time, once you start doing that, you will realize that it is not actually difficult. Now you are in a good zone. You are able to say hi, and from there you will start building your conversations much better. And let's find out some set to say hi now. अब तुमको मैं बताता हूँ कि bad approaches क्या होते हैं और good approaches क्या होती हैं. Bad approaches are when you go and approach somebody from the back when they are not able to see you. तुम बस पीछे से जाके खड़े हो गए, अचानक से आवाज़ दे रहे हो पीछे से. The person has an option to move out or to leave. और जब तुम वो करते हो तो सामने वाला तुमको नहीं जानता, एंड 90% of the time they'll leave because they have an option to leave, right? So when you do not give them an option to leave, then it's where it becomes, because the other person will give you only attention जब it is necessary for them, right? तो there is one way. दूसरा is approaching from बहुत दूर से. You do not have to approach them from very far away. It is not at all right. अगर तुम दूर से approach कर रहे हो तो भी the other person has an option to move out, निकलने का option, right? तीसरा is your tonality. If you're not approaching somebody with good tonality, strong tonality, then it becomes difficult to hold or to catch that conversation, right? So that is one. जब तुम approach करते हो, you do not sound confident. That is also tonality again. You get rejected in your approaches because your tonality is not right. बच्चों से पूछे क्या, बच्चे हैं सारे, उनसे क्या पूछे कि how are your exams going rather than we can ask them, but we can ask them how is your exams going, not how is your dating life going, bro.